एक जनरल साला पूरी फौज को हिजड़ा बना देता है। एक जनरल साला पूरी कौम को हिजड़ा बना देता है। एक खटमल पूरी कौम को अपाहज कर देता है साला एक जनरल। सुबह घर से निकले कौम का बेड़ा गर्क करे, शाम को घर जाए दारू पिए कौम की बच्चियां खराब करे और सुबह तक फिर मर जाए, क्योंकि इसकी रूह और इसके अंदर का इंसान मर चुका है। कुर्सी के लिए घिनौने समझौते कर चुका है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खाकी वर्दी, कौम का कब्रिस्तान। 100 में न जाने कितने बेईमान, फिर भी हमारी फौज महान, क्योंकि एक जनरल साला एक जनरल। टोपी लगाए जनरल कहता है फॉरेन एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। वास्कट लगाए मच्छर कहता है कौम एशियन टाइगर बनने जा रही है। पगड़ी लगाए खटमल कहता है आजादी की बख्शिश हमें दी जा रही है। इसीलिए तो बड़ी मछली छोटी को खा रही है। हमारे चुने हुए कुत्ते हम ही पर भौंकते हैं। हमारे रखे हुए कुत्ते भी हमें ही काटते हैं। हमारी ही बोटियां आपस में बांटते हैं, क्योंकि एक जनरल साला एक जनरल। हमारे वजूद में फटते बारूद की आवाज से नंगे रास्ते कांपते हैं। उनके साथ क्या होने वाला है ये सोचकर कल के पैदा हुए बच्चे एक सांस लेते हुए हाँफते हैं। अमरीकी शैतानों की नाजायज औलाद तहलका मचा रही है और हम जनूबी एशिया में बसने वाले इंसान जिंदगी को गाली बनाए बैठे हैं। क्या करें साला एक जनरल साला पूरी कौम को हिजड़ा बना देता है। गिरो जनरलों, गिरो सालों, गिरो, लेकिन गिरो तो उस झरने की तरह जो पर्वत की ऊंचाई से गिरकर भी अपनी सुंदरता खोने नहीं देता, जमीन की तह से मिलकर अपने असल को नर्क नहीं होने देता। लेकिन इतना सोचने के लिए किसके पास वक्त है, क्योंकि एक जनरल साला एक जनरल। कश्मीर, बंगाल, सियाचिन और कारगिल की लड़ाई में मर गए हजारों इंसान, कौम और मुल्क के नाम पे हो गए लाखों कुर्बान। जिसने आगही और इरफान का झंडा गाड़ा, वक्त के जाबिर हुक्मरान को ललकारा, जान पे खेला फिर भी पुकारा, मैं ही सबसे बड़ा सच हूं। मुझे उसी मंसूर की तलाश है, मगर लगता है कौम की माओं ने मुजाहिद पैदा करने बंद कर दिए हैं। वो भी क्या करे, क्योंकि एक जनरल साला एक जनरल। कभी ये जनरल ये शैतान आएंगे, हमारे दरवाजे पे दस्तक देंगे, हमारे ज़हन दिल की तलाशी लेंगे और हसद और खौफ से जल उठेंगे। उस वक्त हम डरेंगे नहीं, अपने यकीन को ढाल और अंदर की आग को तलवार बनाएंगे। एक न एक दिन तो वो इस आग में कूदेंगे ही, उस दिन वो इसी आग में जलेंगे। हम ही से बख्शिश की भीख मांगेंगे, वही भीख जो उन्होंने हमें देने से हमेशा इनकार किया था। क्या करें, एक जनरल साला एक जनरल। करो सालों जनरलों, मच्छरों, खटमलों करो, आज हमें और बदनाम करो, हमें मसलूक करो, हमें नीलाम करो। नीलामी के लिए है ही क्या हमारे पास, बस चलते हुए आंसुओं का एहसास। मगर हम तुमसे बदला लेंगे, चट्टान की तरह सीना सबर होकर तुम्हारे हर वार को बेकार कर देंगे। तुम्हारी आखिरी गोली भी इस सीने पर खाएंगे और गिरकर फिर उठेंगे। हमने पहले जालिमों से आजादी हासिल की थी, हम तुमसे भी आजादी हासिल करेंगे। फिर साला कोई जनरल इस फौज को हिजड़ा नहीं बना सकेगा। फिर साला कोई मच्छर, कोई खटमल, कोई जनरल इस कौम को हिजड़ा नहीं बना सकेगा। फिर साला कोई जनरल इस कौम को हिजड़ा नहीं बना सकेगा।
This is the Bhutto family mausoleum in the rural south of Pakistan. Since Benazir Bhutto's assassination last year, tens of thousands of people have made the pilgrimage to her grave. Some of these mourners have walked hundreds of kilometers to get here. She lies next to her revered father, Zulfikar Ali Bhutto, founder of the Pakistan People's Party, or PPP. He was executed in 1979 by the military ruler of the day. Bhutto's death has left the country and its largest political party in turmoil. Her successor is Asif Ali Zardari, her controversial husband, who may be Prime Minister soon, but can't see beyond the tragedy. I think every moment and every part of my life is just trying to cope with the situation I'm in. I'm just not thinking very far ahead. I'm just taking every minute as it comes, every hour as it comes. As the grieving continues, the struggle for democracy goes on. Pakistan's lawyers have been leading the charge to oust President Musharraf, ever since he put the Chief Justice under house arrest and sacked most of the nation's top judges. The Islamabad Bar Association has called a meeting to decide their next move. उनके घर का पानी बंद किया जा रहा है, जो कूफियों की रवायत को दोबारा जिंदा किया जा रहा है, और उसके अलावा उनकी बिजली और गैस जो है वो बंद की जा रही। तो आप लोग उसकी पुरजोर मुजम्मत करते हैं, आप तायद करते हैं। Our movement will remain till the reinstatement of the judges who have been deposed, and it will continue with full enthusiasm and full courage and full power. Whatever the risk. Whatever the risk is. Harun Rashid is the president of the Islamabad Bar Association. We are not hesitating from this situation. We will fight in the interest of nation and in the interest of country and in the interest of judiciary and the constitution. He says General Musharraf has trampled on the constitution by reinstalling himself as president and stacking the courts with compliant judges. He knew that he will not be allowed to contest election of the president. Therefore, he once again imposed emergency on 3rd of November, and he removed all the judges of the superior courts illegally and unconstitutionally, and the persons who have no knowledge of law became the judges of the High Court and Supreme Court. Some of the more militant lawyers even want the ultimate punishment for Musharraf's hand-picked judges. But not everyone here agrees. Political scientist Rasul Bakhsh Rais says he understands the lawyers' rage. I don't think that it is less than a constitutional farce, an insult to the people of this country. If he can disband a judiciary, send 80% of the judges of the Supreme Court and High Courts of the country home, dismiss them, disqualify them, and pack the court with his favorites, and suspend the constitution twice, why he would not rig the elections?
But this is a question of the record. And every by-election in this country, including his referendum, where he obtained 98.3% of popular votes, a joke in the country. So why he would not rig the election? Their meeting decides to continue the boycott of Musharraf's stacked courts. We shall continue the strike till our objectives, achievement of our objectives. Okay, so that was unanimous, was it? Unanimous, it was unanimous. Today you have seen that not a single word has come contrary. We shall continue strike in High Courts and Supreme Court. Pervez Musharraf is terrorist and terrorist against Pakistanis, against Muslims, against Dastur, against judges, against Wukla and against civil community. 3 days later, the lawyers decide to march on the Chief Justice's residence, where he's being held under house arrest. They're joined by colleagues from 7 other bar associations, and they're expecting trouble. The demonstration quickly turns ugly, and the air soon swirls with tear gas. As the lawyers retreat, they're hit by more tear gas. Amidst the crowd, I see Rudad Khan, a retired bureaucrat who seems too old to be in a skirmish like this. It is not acceptable to the people of Pakistan. Chief Justice is in jail, you know. As the lawyers are pushed back, I see the Islamabad Bar Association president, Harun Rashid, stranded between police and his colleagues. Yes, you got cut. What were you trying to tell me before? Your eyes were streaming with water. Tear gas, yes. He's a usurper. He does not derive his authority from the people of Pakistan. He is unelected. He is illegitimate. He is illegal. He is unconstitutional. He has no authority to rule 160 million people of Pakistan. He has to go. He has to go. There is no doubt about that. Many here are outraged that the West supports Musharraf. You are on the wrong side of history. You are all on the wrong side of history. You must be with the people of Pakistan, not with the usurper, not with the military dictator. She was the Queen of Hearts and she will... While protesters battle it out on the streets, Bhutto's party is preoccupied with honouring her memory at services like this.